हाय फ्रेंड्स, I'm सपना अग्रवाल, क्रिएटिव डायरेक्टर एट अंसा इंटीरियर्स। और आज के वीडियोस में वील ट्राई एंड शेयर इंटीरियर डिज़ाइन ट्रेंड्स विच आर रियली एक्टिव इन 2022। बट बिफोर आई एक्चुअली स्टार्ट विद दिस, आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोगों को ऐसे कौन से ट्रेंड्स हैं जो इस साल ज़्यादा दिखे हैं। बिकॉज इंटीरियर डिज़ाइन इज़ मोर लाइक फैशन इंडस्ट्री नाउ। जैसे जैसे कल्चर और करंट इवेंट्स बदलते हैं वैसे वैसे इंटीरियर डिजाइनिंग ट्रेंड्स भी बदल जाते हैं। सो मोर लाइक मटेरियल, कलर, सब कुछ ही बदल जाता है। सो इस साल काफी सारे ऐसे ट्रेंड्स हैं जो काफी चेंज हुए हैं। And in this article, I'll share about 11 trends which are really in right now. इंटीरियर डिजाइनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे दे एक्चुअली रिवॉल्व अराउंड अ सेंटर कैरेक्टर टू द होल प्रोजेक्ट। अब जब हम इंटीरियर डिजाइनिंग ट्रेंड्स की तरफ देखते हैं तो ग्रास रूट में उसमें काफ़ी सारे डिज़ाइन मूवमेंट्स होते हैं, काफ़ी ट्रेंड्स होते हैं जो मैगजीन्स डिक्टेट करती है या काफ़ी फैशन चैनल्स भी डिक्टेट करते हैं। काफ़ी एप्स हैं या इंटीरियर डिज़ाइनिंग की जो आपकी अब नई पिन इंटरेस्ट पे इमेजेस आती है वो भी काफ़ी कुछ डिक्टेट कर जाती है। बट अल्टीमेटली एक मेजर ग्रास रूट ट्रेंड आता है जो हमेशा एक्टिव हो जाता है। सो ऐसे 11 ट्रेंड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, जो वार्म कलर्स है वो वापस आने शुरू हो गए हैं। लास्ट ईयर तक हम सबने एक ट्रेंड देखा था विच वॉज मोर ग्रे। ग्रे हैड बिकम एक्चुअली अ न्यूट्रल कलर, उसमें ग्रे हर जगह दिखता था हमें। बट जैसे ही 2022 आया, वार्म कलर्स बहुत ह्यूज कमबैक लाए हैं। समहाउ ब्राउन्स, बेज, जो अर्दी टोन्स हैं जो पहले हमारे लास्ट ईयर तक कम दिखने शुरू हो गए थे, अब बहुत ज्यादा मार्केट में दिखने शुरू हो गए हैं। वार्म पैले इज मोर इन एंड इट इज एक्चुअली रिप्लेसिंग द कूल ह्यूज दिस सीजन। सेकेंडली, कर्व्स बहुत रिप्लेस कर गए हैं स्ट्रेट लाइंस को। जब तक हम लास्ट ईयर देख रहे थे बहुत ज्यादा स्ट्रेट लाइन, ऑर्गेनिक, बॉक्सी एजेस, क्लियर लाइंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन थी। बट अब इस साल से 2022 से थोड़ा थोड़ा सर्कुलर फर्नीचर, मिरर्स, आर्टवर्क्स एंड मोर, आई थिंक lot of things have come into a more casual, more smooth, more curvy vibe. थर्ड, आई थिंक बोल्ड वॉलपेपर्स बहुत इन है इस सीजन में। बोल्ड wallpapers are used in living rooms, they're used in bedrooms, they also are used for to maximize the design. बहुत bold twist आया उसमें। Interestingly लास्ट ईयर तक बहुत सिंपल, बहुत डेकोरेटिव आइटम्स नहीं चल रही थी। कुछ बहुत सिंपलर एलिमेंट्स थे, कुछ बहुत न्यूटेड एलिमेंट्स थे। बट इस साल से दे आर मोर बोल्डर, मोर डेकोरेटिव एंड वॉलपेपर समहाउ एक टाइप का आर्ट ले आए हैं। मतलब इट्स काइंड ऑफ यू कैन एक्चुअली ग्राफिक्स के साथ अब आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। सो बहुत स्ट्रॉन्ग ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, लैंडस्केप, एब्स्ट्रैक्ट शेप्स, ह्यूमन एनिमल फिगर्स बहुत ज्यादा इस साल इन आई है। फोर्थली, स्टेटमेंट सीलिंग्स। लास्ट ईयर तक ट्रेंड में बहुत सिंपल सीलिंग्स थी, कलर कभी यूज ही नहीं होता था सीलिंग्स पे। बट इस साल थोड़ा सा ट्रेंड बदलना शुरू हो गया है। देर आर मोर बोल्ड कलर्स, देर आर मोर पैटर्न्स, इवन मिरर्स आर फिक्स्ड। इनफैक्ट पेंटिंग्स भी शुरू हो गई हैं अब तो सीलिंग्स पे, जो बोथ इन रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्लेसेस में अब दिख रही हैं। थोड़ा सा एसेंट्रिक है बट इट इज स्टिल एन इंटीरियर डिजाइनिंग ट्रेंड विच इज प्रोवाइडिंग अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग लुक, काइंड ऑफ अ क्वर्की एंगल टू द रूम। फिफ्थ, आई थिंक ये तो सबने ही ऑब्जर्व किया होगा दैट नेचर हैज कम इनडोर्स। when we look at now the interior designing trends, जितने भी हम नए घर देख रहे हैं उसमें बहुत इको फ्रेंडली अप्रोच हो गई है। पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स मोर वार्मर टोन्स, मोर नेचुरल एलिमेंट्स। जितना भी डेकोर है, अब वुड का जो यूज है या रियल हो या फॉक्स हो, बट बहुत हाई डिमांड में आ गया। समहाउ नेचुरल वुड हर जगह आ गई, फ्लोरिंग में, कुकटॉप पे, एक्सेंट डेकोर में, कैबिनेट्स में, बहुत सारी जगह उसने अपना एंट्रेंट बना लिया। ऑल्सो लोगों की अप्रोच थोड़ी सी इको फ्रेंडली होनी शुरू हो गई है डिजाइन की तरफ। बैम्बू विद सस्टेनेबल फ्लोरिंग्स कमिंग इन, आई थिंक इट्स अ ह्यूज flow of bamboo products coming into the market now. Bamboo flooring has come up with a high vibe now. इंडोर प्लांट्स बहुत आ गए हैं, ब्रिंगिंग नेचुरल इंडोर्स इनसाइड इज समहाउ द हॉटेस्ट ट्रेंड दैट आई हैव सीन इन 2022.
Sixthly, I think there is a lot of monochrome palette which has come in. जैसे ही हम इंटीरियर डिजाइन की बात करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत क्लासिक एलिगेंस होती है. बहुत ज्यादा जो इन आया वो ब्लैक एंड व्हाइट फिक्सचर्स आ गए. जितनी भी अब आप एल्यूमिनियम विंडोज देखते हैं, मोर ब्लैक. पहले एक ट्रेंड था जो व्हाइट था, फिर फिनिस्टा वगैरह ने वुडन लॉन्च की फिनिशेस. अब somehow it's more grey, more black, more slimline, but black and white prints बहुत इन आ गए. एक्सेसरीज भी जो आई वो बहुत स्कैंडिनेवियन डिजाइन से रिलेटेड आई. दैट मीन्स somehow उसमें एक ऐसा ट्रेंड आया कि ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आपको हर जगह दिखने शुरू हो गए. टाइल्स में भी आ गए, फैब्रिक्स में आ गए, कुशंस में भी आ गए. सो somehow that's come in with a big hit. ऑल्सो अगर आप वॉल्स की भी बात करते हैं तो जितने भी हमारे करंट इंटीरियर डिजाइन ट्रेंड्स चल रहे हैं उसमें डार्क कलर विद ब्राइट वाइट फर्निशिंग्स बहुत चिक माना जा रहा है. देन there is a lot of minimalistic vibe also with monochrome elements that has kind of being used as a type of decor. Seventh, I think multi-purpose furniture or flexible spaces. जैसे ही कोविड आया उसके बाद सडनली वी सॉ दैट लॉट ऑफ एरियाज, लॉट ऑफ फर्नीचर हैज ट्रेंडेड टुवर्ड्स मल्टी फंक्शनल स्पेसेस सो दैट यू अलाउ मोस्ट ऑफ द स्पेस टू बी यूटिलाइज्ड. सबके घरों में ऑफिसेस बन गए. सो यू नो दोज स्मॉल टेबल्स हैड टू कम इन. स्पेशली जहाँ स्मॉलर स्पेसेस थी वहाँ यूटिलिटी एंड फंक्शनल वर वेरी एसेंशियल. सो मेकिंग flexibility actually like a current interior designing trend. For example, there is a lot of use of fold out tables, chairs, furniture which can transition from living to dining room, from bed to a sofa. So transitional furniture which can be multifunctionally used became like a very very important trend. Also, eighthly, I would have observed that there is a lot of concrete accent which has come in. Concrete, I think commonly it was used majorly for floors earlier and countertops when I think about 30 years back, most of the countertops were in concrete only. But it's a very versatile element. It's a bada versatile material here to be used. It's very, very interesting कि वो unexpected ways में it has become like a home decoration. मतलब trends like pendant light, like faucets. I think it's very amazing how concrete has come into the market, but in different forms now. When we look at decorative concrete, I see a lot of paints that have come up in concrete finishes. I think we all must have observed that. But concrete in itself is very dull. It just takes away everything of life from it. So now the comeback is that when we use concrete, we use it with warm colors or stark colors like red, tangerine, yellow, so that it makes the space a little more lively. It makes this space talk out. It's not just there. Ninthly, I think maximization. Interior designing trends, somehow in 2022, there has been a lot of clashing prints, bright colors, very alluring articles. Somehow I have seen a lot of statement making articles come in, statement making counterpieces come in. Initially ये सब चीजें नहीं थी last year तक we would have seen simpler things, but this time when we see even the array of cushions, it's more vibrant, it's more talking to yourself, you know, it's like it speaks out. Somehow the trends have completely changed. 10th, I think sustainable design. Sustainability, I would say it is there embedded into everybody right now. Sustainability refers to minimizing actually the environmental impact. For example, अगर आप एक पेड़ काटते हैं और आप एक बुक शेल्फ बनाते हैं, तो in opposed to that, if you use a ply, you're really saving wood. Also, even if you buy a second hand and refurbish it, you're really saving a lot on the earth. So the current interior designing trends jitne bhi hain, there is a local shift in the stores also, that you would have seen that
the wood articles are not really very in, because people have started coming up with the fact that there has to be a lot of sustainability in the products that we use. There is less of wastage. So somehow wo jo pehle trend tha ki we change everything, now it is more like refurbishing a lot of things. Bamboo floors, as I've already said, is a huge comeback because it's something which is very easily replenished, और बहुत ज़्यादा stylish choices भी हैं उसमें. 11th and not the last, I think we all would agree that there is a huge in of smart technology. टेक्नोलॉजी इन इंटीरियर डिजाइनिंग हमें ऐसा लगता था कि हिस्टोरिकली थी थोड़ी बहुत, तो बट अब 2022 में everything is remote controlled. We can control everything using our mobile phones, even our geysers, our ACs, our heating, HVACs, everything is remote controlled now. अब जितने भी electronics है, they're very sleek. There is a lot of change in the electronic industry right now. So friends, I would say that 2022 में काफी major shift आया trends के अंदर, but as I would also like to know कि आपने ऐसा कौन सा shift है जो देखा हो. आपने जो भी shift देखा है इसमें, just let us know in the comment sections, and we'll see you next Wednesday. For any kind of interior or architectural design consultancy, you can contact us on www.ansainteriors.com. See you next Wednesday. Bye.